ये आकाशवाणी है। आज रात क्षेत्रीय और सरल संगीत की राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रसारण में हम विदुषी सुमित्रा राय द्वारा भवैया लोकगीत प्रस्तुत करते हैं। विदुषी सुमित्रा रॉय का जन्म 29 अगस्त 1965 को उत्तर बंगाल के भोटपाड़ा गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। वह आकाशवाणी की टॉप ग्रेड कलाकार हैं और भवैया संगीत की प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। उन्होंने जिला सूचना और सांस्कृतिक मामले पश्चिम बंगाल, कामतापुरी भाषा अकादमी और संस्कृति उत्तर बंगाल, केंद्रीय संगीत परिषद आदि द्वारा सम्मानित किए गए हैं। भवैया के नाम से जाने जाने वाले लोकप्रिय लोक संगीत की जड़ें उत्तर बंगाल में है। यह गीत दर्द, लालसा, प्रेम, विरह जैसे गहरी भावना को बढ़ाते हुए लंबी स्वरों के साथ अलगाव और अकेलेपन के दर्द को व्यक्त करता है। आज के कार्यक्रम में विदुषी सुमित्रा राय भवैया लोक गीत प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम के शुरुआती गीत है ओके गाड़ियाल भाई। इस लोक गीत में विवाह के तुरंत बाद एक विवाहित महिला का एक बैलगाड़ी चालक के साथ हृदय विदारक और मर्मर स्पर्शी वार्तालाप है। वह उस गाड़ी चालक से कहती है कि वो अपना पशुयान धीरे धीरे चलाए ताकि वो अपने पिता के घर को फिर से निहार सके। वो अपने भाइयों और बहनों को बिना कैसे रह पाएगी, इसलिए वह स्त्री अपील करती है कि उसको उसके ससुराल से थोड़ी ही देर में उसके मायके लौट आया जाए। और बचपन के दिनों की घरेलू यादों का दुख इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। This is Akashvani. We present Bhavaiya songs performed by Vidushi Sumitra Roy in tonight's broadcast of National Program of Regional Folk and Light Music. Srimati Sumitra Roy was born on 29 August 1965 to a Hindu family in the village of Bhotpada in West Bengal. She is a top-grade artist of Akashvani. She is a representative of Bhavaiya music and has participated in numerous cultural events. She has been felicitated by the District Information and Cultural Affairs, West Bengal, Kamtapuri Language Academy and Culture, Uttar Bengal Kendriya Bhavaiya Sangeet Parshad. Popular folk music known as Bhavaiya has its roots in North Bengal. The lyrics express pangs of separation and loneliness with elongated tones actuating pain, longing and deep emotion. It frequently features the theme of working class. Vidushi Sumitra Roy is going to start her presentation with Bhavaiya folk song Oi Gariyal Bhai. This folk song contains heartbreaking and touching cry of a married lady to a cart driver. She begs to him that he must drive his cart slowly so that her father's house remain visible. How can she remain without her brothers and sisters? So she appeals that she may be returned to her father's house within a short time. Her love for paternal things, homesickness and nostalgia of childhood days is sorrowfully expressed through this song. गाड़ियाल भाई धीरे धीरे हाकाओ रे तोमार गाड़ी। ओ की गाड़ियाल भाई धीरे धीरे हाकाओ रे तोमार गाड़ी। बाबार देशेर माया रे ছাড়ি মন না যায় মোর শ্বশুর বাড়ি রে। কেমন করি থাকি খেলার সাথী ছাড়ি রে। ও কি গাড়িয়াল ভাই ধীরে ধীরে হাকাও রে তোমার গাড়ি।
বাচ্চা ভাই বইনকে আদর করি মানসি করিনু কোলা পিঠিত করি রে কান্দে ভাই বোন মোরে দিদি দিদি করি রে ও কি গাড়িয়াল ভাই ধীরে ধীরে হাকাও রে তোমার গাড়ি না কান্দো না কান্দো মোর মাও মোর বুক ভাঙ্গে রে ও মোর মাও দাদাকে পেঠাস নায়োর আনিবে দয়ার ভাউজিকে সাথত নিবে রে নয়া গরুর হাল ধরিয়া দিবে গাড়িতে রে ও কি গাড়িয়াল ভাই ধীরে ধীরে হাকাও রে তোমার গাড়ি ও কি গাড়িয়াল ভাই ধীরে ধীরে হাকাও রে তোমার গাড়ি ধীরে ধীরে হাকাও রে তোমার গাড়ি ধীরে ধীরে হাকাও রে তোমার गाड़ी। अगला गीत का विषय है प्राकृतिक चीजों के खोए हुए परिदृश्य पर केंद्रित। आजकल हम गाय और भैंस की गाड़ियाँ, बरगद के पेड़ की ठंडी छाया, धरला नदी का पर्याप्त पानी से दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। The next song is Pathare Batase Kande. This song expresses the lost scenario of life and nature.
विदुषी सुमित्रा राय के अगले प्रस्तुति के बोल हैं, कोकिला मयना रे कुहू कुहू तुयार कांदिशना। अर्थात एक नई नवेली लड़की ने शादी के तुरंत बाद ही अपने पति को खो दिया है। युवती विधवा का कोयल और मैना के साथ किया गया वार्तालाप और बांटा गया दुख और दर्द इस गीत के माध्यम से व्यक्त किया गया है। The next song is Kokila Moinare Kuhu Kuhu Tui Ar Kandisna. The girl has lost her husband just after their marriage. The profound pain and agony of a young widow has been expressed to the cuckoo birds through this song. কোকিলা ময়না রে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না, তোর কান্দনে নারীর মন মোরে ভাবে মানে না, আরে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না, তোর কান্দনে নারীর মন মোরে ভাবে মানে না, আরে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না, আরে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না। ভেলদিন আগে মরিছে স্বামী এলাও মনে পড়ে, ও কি ওরে তোর কান্দন শুনিলে কোকিলা বুক খান মোর কাঁপিয়া ওঠে, কেমন করিয়া পাশুরি থাকিম বিয়ার স্বামীর কথা, আরে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না, আরে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না। চন্দন গাছের শুকনা ডালে রে বাসা তুই বান্ধিস না, ও কি ওরে দুন্দে ভাঙিয়া নি গাইবে তোর ওই না, ছোট বাসা রে, আরে মোর যেমন ঘর ভাঙিছে বিধাতা, ও কি ওরে দুন্দে ভাঙিয়া নি গাইবে তোর ওই না, ছোট বাসা রে, আরে মোর যেমন ঘর ভাঙিছে বিধাতা, কোকিলা ময়না রে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না। যেমন থাকিস বনে মুইও থাকং ঘরে, ও কি ওরে
দুঃখের কথা মোর কাইবা বুঝিবে ও কি ওরে ঘরে বনে তফাত নাই মোর দুঃখে রোকারণে রে আরে দুঃখের কথা মোর কাইবা বুঝিবে কোকিলা ময়না রে কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না তোর কান্দনে নারীর মন মোর ভাবে মানে না আর কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না তোর কান্দনে নারীর মন মোর ভাবে মানে না আর কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না আর কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না আর কুহু কুহু তুই আর কান্দিস না আর কুহু কুহু তুই আর कांदिस ना। अगले गीत का विषय है राधा कृष्ण प्रेम लीला के ऊपर आधारित। यह गीत श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच भव्य प्रेम का वर्णन करता है। श्री कृष्ण के मधुर बांसुरी का धुन सुनकर श्रीमती राधा उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। The next song is O Ki Sham Nagwar Kalare Tor Basir Sure. This song is the love matter between Sri Krishna and Srimati Radha. Srimati Radha is attracted to Sri Krishna after hearing the sweet tune of his flute.
परिवेशित आखिरी गाने में वक्ता तीस्ता नदी की विभीषिका देखकर रो रहा है। कथावाचक बेघर हो जाता है और वह भोजन और कपड़ों की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। वह अपने परिवार से बिछड़कर हर जगह भटकता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। The next song is Man Mor Kandere Tista Nodir Ore Bhangon Dekhia. The speaker is crying in pain over the devastating condition of Tista River. The narrator becomes homeless and he moves here and there in search of food and clothes. He leaves his family and wanders everywhere and becomes dependent on others. মন মোর কান্দে রে তিস্তা নদীর রে ভাঙন দেখিয়া বাড়ি ঘর মোর ভাঙিয়া রে নীলু দেখে মন মোর কান্দে রে বাড়ি ঘর মোর ভাঙিয়া রে নীলু দেখে মন মোর কান্দে রে আজি বাড়ি ঘর মোর ভাঙিয়া নীলু রে ও নদী তুই ভাঙিয়া করিলু রে ভাতো নাই মোর কাপড় নাই থাকক পরার ঘরত মন মোর কান্দে রে আজি বাপ ছাড়ালু ভাই ছাড়ালু রে ও নদী তুই ছাড়ালু দেশের মায়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়া মানসির বাড়িত খায়া মন মোর কান্দে রে দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়া মানসির বাড়িত খায়া মন মোর কান্দে রে। अभी आप प्रादेशिक लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विदुषी सुमित्रा रॉय द्वारा भवैया गीत की प्रस्तुति सुन रहे थे। उनके साथ तबले पर संगत प्रदान किया है शुवीर अधिकारी, बांसुरी पर परेश चंद्र राय और दोतारा पर अविनाश चंद्र राय ने। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी शिलीगुड़ी के प्रसार कक्ष में ध्वनि अंकन किया गया है। कृपया अगली घोषणा तक प्रतीक्षा करें। This is Akashvani. You were listening to Bhavaya Songs, presentation by Bidushi Sumitra Roy. She was accompanied by Subir Adhikari on tabla, Paresh Chandra Roy on flute, and Abhinash Chandra Roy on dotara. This program was recorded at the studios of Akashvani Siliguri. Please stand by for the next announcement. आज के प्रादेशिक लोक तथा सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं कर्नाटक क्षेत्रीय कन्नड़ भाषा में श्री नितिन राजाराम शास्त्री का सुगम संगीत।
श्री नितिन राजाराम शास्त्री आकाशवाणी और दूरदर्शन के लघु तथा भक्ति संगीत विभाग के ए ग्रेड कलाकार हैं। आप श्री टी.एस. राजाराम तथा श्रीमती गीता राजाराम के सुपुत्र हैं। आपने मस्कत में श्रीमती श्यामला विनोद कुमार के मार्गदर्शन में 4 साल तक कर्नाटक संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1996 में मैसूरू आने के बाद पंडित वीरभद्रಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ तथा पंडित इंदुधर निरोडी के मार्गदर्शन में लगभग 20 साल तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा आपने श्री मडिकेरी नागेंद्र, श्री राजू अनंत स्वामी तथा श्री N.S. प्रसाद से लघु संगीत का प्रशिक्षण भी प्राप्त की है। देश और विदेशों में आयोजित कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में श्री नितिन राजाराम शास्त्री ने अपना गायन प्रस्तुत किया है। आप कई प्रकार के प्रशंसा और पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। आज के प्रादेशिक लोक तथा लघु संगीत कार्यक्रम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कीबोर्ड पर श्री पुरुषोत्तम किरगसूरू, मैंडोलिन पर श्री सी विश्वनाथ, गिटार पर श्री प्रदीप किग्गाला, तबले पर श्री परमेश्वर हेगड़े तथा रिदम पैड पर श्री विनय रंगधोल। In continuation of today's national program of regional folk and light music concerts, we now bring you Karnataka Regional Light Music in Kannada by Nitin Rajaram Shastri. Nitin Rajaram Shastri is an A-grade artist in light and devotional music category in Akashvani and Doordarshan. He is the son of Shri T.S. Rajaram and Srimati Geeta Rajaram. He received his initial Carnatic music tutelage in Muscat under Srimati Shamala Vinod Kumar for about 4 years. After shifting to Mysuru in 1996, he received Hindustani music vocal tutelage from Pandit Veerabhadraya Hiremath and Pandit Indudhar Nirodi for about 20 years. He has also received training in light music under the tutelage of Shri Madikeri Nagendra, Shri Raju Anantaswamy and Shri N.S. Prasad. Nitin Rajaram Shastri has performed in many prestigious events conducted in India and abroad. He has won various awards and accolades to his name. In today's national program of regional folk and light music, Nitin Rajaram Shastri is accompanied by Purushottam Kiragasur on keyboard, C. Vishwanath on mandolin, Pradeep Kiggal on guitar, Parameshwar Hegde on tabla and Vinay Rangadhol on rhythm pad. श्री नितिन राजाराम शास्त्री डॉक्टर डी.वी. गुंडप्पा की कविता से अपना कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। ವನಸುಮದೊಳೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ. Nitin Rajaram Shastri begins his concert with a poem by Dr. D.V. Gundappa, ವನಸುಮದೊಳೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ. ವನಸುಮದೊಳೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ಹೇ ದೇವಾ. ವನಸುಮದೊಳೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ಹೇ ದೇವಾ. ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವೀವ ಘನನು ನಾನೆಂದೆಂಬ, ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವೀವ ಘನನು ನಾನೆಂದೆಂಬ, ಎಡಿಕೆ ತೋರದೆ ಜಗದ ಪೊಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡದೆ, ವನಸುಮದೊಳೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ದೇವಾ.
ಮೌನದಿಂಬಿರಿದು ನಿಜ ಸೌರಭವ ಸೂಸಿ ನಲಿವಿಂ ಕಾನನದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯು ಮೌನದಿಂಬಿರಿದು ನಿಜ ಸೌರಭವ ಸೂಸಿ ನಲಿವಿಂ ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನು ತೋರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ ವನಸುಮದೊಳೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ದೇವಾ. ಉಪಕಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನುಪಕೃತಿಯ ಜಗಕ್ಕೆಂಬ ವಿಪರೀತ ಮತಿಯನುಳಿದು ಉಪಕಾರಿ ನಾನು ಎನ್ನುಪಕೃತಿಯ ಜಗಕ್ಕೆಂಬ ವಿಪರೀತ ಮತಿಯನುಳಿದು ವಿಪುಲಾಶ್ರಯವನೀವ ಸುಫಲ ಸುಮಭರಿತ ವಿಪುಲಾಶ್ರಯವನೀವ ಸುಫಲ ಸುಮಭರಿತ ಪಾದ ಪದಂತೆ ನೈಜಮಾದೊಳ್ಪಿನಿಂಬಾಲ್ಬವಳು ವನಸುಮದೊಳಿನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ದೇವಾ. ಜಗಕ್ಕೆ ಸಂತಸವೀವ ಘನನು ನಾನೆಂದೆಂಬ ಎಣಿಕೆ ತೋರದೆ ಜಗದ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ವನಸುಮದೊಳೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ದೇವಾ. ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ದೇವಾ. ಮನವನನುಗೊಳಿಸು ಗುರುವೇ ದೇವಾ. अब आप सुनेंगे केसी शिवप्पा की कविता हाडु नी इनिराग इरुवाग शारीर. Now we bring you a composition of K.C. Shivappa, ಹಾಡು ನೀ ಇನಿರಾಗ ಇರುವಾಗ ಶಾರೀರ. ಹಾಡು ನೀ ಇನಿರಾಗ ಇರುವಾಗ ಶಾರೀರ. ಹಾಡು ನೀ ಇನಿರಾಗ ಇರುವಾಗ ಶಾರೀರ ಎಂದು ಹಿಂಪಡೆಯುವನು ಕೊಂಠ ಕೊಟ್ಟವನು ಅವನೊಲುಮೆ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಜಗದಿ ಮೂಕರು ನಾವು. ಅವನೊಲುಮೆ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಜಗದಿ ಮೂಕರು ನಾವು. ಪಡೆದುದಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನು ಮುದ್ದು ರಾಮ ಪಡೆದುದಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನು ಮುದ್ದು ರಾಮ. ಪಡೆದುದಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನು ಮುದ್ದು ರಾಮ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಮುದ್ದು ರಾಮ.
ರಾಗದ ಪಲುಕು ಯಾರ ಕವನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಯಾವ ರಾಗದ ಪಲುಕು ಯಾರ ಕವನಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಎಂತು ತರುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ರಮ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಧುರನಾದದ ಸೌಖ್ಯ ಪೂರ್ವ ಜನುಮದ ಸುಕೃತ ಮಧುರನಾದದ ಸೌಖ್ಯ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ ಗಾನ ಮೋಹನ ಯಾನ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಗಾನ ಮೋಹನ ಯಾನ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಗಾನ ಮೋಹನ ಯಾನ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಮುದ್ದು ರಾಮ ಗೇಯತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ ಲಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದವಿದೆ ಗೇಯತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ ಲಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದವಿದೆ ಛಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಸಂಗತ ಲಹರಿ ಛಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಸಂಗತ ಲಹರಿ ಹಾಡು ನೆನಪಿನ ದನಿಯೋ ಮುದ್ದು ರಾಮ 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 ಮುದ್ದು ರಾಮ ಮುದ್ದು ರಾಮ श्री नितिन राजाराम शास्त्री की अगली प्रस्तुति है नेनपागी बारदिरु मण्णुगूडिद वलवे। इस कविता को लिखा है प्रोफेसर K.S. निसार अहमद। Nitin Rajaram Shastri continues his recital with a poem written by Professor K.S. Nisar Ahmad, Nenapagi Baradiru Mannugudida Valave. ನೆನಪಾಗಿ ಬಾರದಿರು ಮಣ್ಣುಗೂಡಿದ ಒಲವೇ ಎಂದೋ ನಲಿಸಿದ ನಗೆಯ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಬಾರದಿರು ಮಣ್ಣುಗೂಡಿದ ಒಲವೇ ಎಂದೋ ನಲಿಸಿದ ನಗೆಯ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದುಕ ಕಲೆಗೊಳಿಸಲೆಂದು ನಾ ಹೆಣಗಿರುವೆ ಹೊಸ ಬದುಕ ಕಲೆಗೊಳಿಸಲೆಂದು ನಾ ಹೆಣಗಿರುವೆ ಹೊಲೆಗೆಡಿಸದಿರು ಕಂಬನಿಯ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಬಾರದಿರು ಮಣ್ಣುಗೂಡಿದ ಒಲವೇ ಎಂದೋ ನಗಿಸಿದ ನಗೆಯ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮರೆತ ಗೋರಿಯ ಕೆದಕಿ ಹಸಿಯಲುಬುಗಳ ನಾಯ್ದು ತುಂಬದಿರು ಮುಂಬಾಳ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮರೆತ ಗೋರಿಯ ಕೆದಕಿ ಹಸಿಯಲುಬುಗಳ ನಾಯ್ದು ತುಂಬದಿರು ಮುಂಬಾಳ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರಿಸುದಿರು ನನ್ನ ಚಿತೆಯ ನಗೆಯನು ಹೊಯ್ದು ಸಿಂಗರಿಸದಿರು ನನ್ನ ಚಿತೆಯ ನಗೆಯನು ಹೊಯ್ದು ನಾನೇ ಬೆಳೆಸಿದ ಹೂವ ಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ
ನೆನಪಾಗಿ ಬಾರದಿರು ಮಣ್ಣುಗೂಡಿದ ಒಲವೇ ಎಂದೋ ನಲಿಸಿದ ನಗೆಯ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತೋರಣದ ಕನಸ ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡು. ಯೌವನದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ತೋರಣದ ಕನಸ ತರಗೆಲೆಗಳನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡು. ಅದರ ಅಲುಗಾಟಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ, ಅದರ ಅಲುಗಾಟಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ, ಕೆದಕದಿರಲೆದೆ ತುಂಬ ಜೇನುಗೂಡು ಜೇನುಗೂಡು. ನೆನಪಾಗಿ ಬಾರದಿರು ಮಣ್ಣುಗೂಡಿದ ಒಲವೇ ಎಂದೋ ನಲಿಸಿದ ನಗೆಯ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ. ನಗೆಯ ದಳಗಳು ದೂರಿ ಬರಿದಾದ ತುಟಿ ಹೂವು, ಬಟ್ಟಗಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ನಗೆಯ ದಳಗಳು ದೂರಿ ಬರಿದಾದ ತುಟಿ ಹೂವು, ಬಟ್ಟಗಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಮೋಡ. ಹೃದಯದಳ ನೋವುಗಳ ಬಿರಿಸುವರೆ ಮರೆ ಮಾತು, ಹೃದಯದೊಳ ನೋವುಗಳ ಬಿರಿಸುವರೆ ಮರೆ ಮಾತು. ಮಾಯ್ದ ಗಾಯವ ಮತ್ತೆ ಗೀಚಬೇಡ ಗೀಚಬೇಡ. ಭವಿತವ್ಯದೊಸಗೆಯಲಿ ಸಾಲಾಗಿರಿಸದಿರು, ಅಂದೆಂದೋ ಮುಗಿದಿರುವ ದೀಪಗಳನ್ನು. ಚಂದಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ದೊಂದೆ ತಂದೆಸೆದು, ಚಂದಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ದೊಂದೆ ತಂದೆಸೆದು, ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತದಿರು ತಾಪಗಳನ್ನು. ಮನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತದಿರು ತಾಪಗಳನ್ನು ತಾಪಗಳನ್ನು ತಾಪಗಳನ್ನು. श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए डॉक्टर एच.एस. वेंकटेश मूर्ति की कविता नीली बानिनली बागी तूगुतिह. We now bring you a poem written by Dr. H.S. Venkatesha Murthy, ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲಿ ಬಾಗಿ ತೂಗುತಿಹ. ಬಾನಿನಲಿ ಬಾಗಿ ತೂಗುತಿಹ
ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲಿ ಬಾಗಿತ್ತು ಗುತಿಹ ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. ರಾಗತಾನಗಳ ಪುಷ್ಪರೇಣುಗಳ ರಾಗತಾನಗಳ ಪುಷ್ಪರೇಣುಗಳ ನರುಗಂಪಿನ ಪ್ರಣಯೋನ್ಮಾದ. ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲಿ ಬಾಗಿತ್ತು ಗೋತಿಹ ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. ಚಂದಿರನ ತೆರೆದ ತೋಳಿನಲಿ ತಬ್ಬಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೊರೆವಥರ. ಕಡಲು ಚಂದಿರನ ತೆರೆದ ತೋಳಿನಲಿ ತಬ್ಬಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೊರೆವಥರ. ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೊರೆಯೋ ರಾಧೆಯ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪೊರೆಯೋ ರಾಧೆಯ. ಹಾಯುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಸ್ವರ. ಹಾಯುತ್ತಿದೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಸ್ವರ. ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲಿ ಬಾಗಿತ್ತು ಗುತಿಹ ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. ಗಾಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕೊಳಲು ವೇಣುವನದೈ ಬಯಲಿನಲಿ. ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಗೆ ಸಾವಿರ ಕೊಳಲು ವೇಣುವನದೈ ಬಯಲಿನಲಿ. ತೇಲುವ ಮುಳುಗುವ ನಾದದ ಲಹರಿ. ತೇಲುವ ಮುಳುಗುವ ನಾದದ ಲಹರಿ. ಚಂದ್ರದೋಣಿ ಬಾನಿರುಳಿನಲಿ. ಚಂದ್ರದೋಣಿ ಬಾನಿರುಳಿನಲಿ. ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲಿ ಬಾಗಿತು ಗುತಿಹ ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. ರಾಗತಾನಗಳ ಪುಷ್ಪರೇಣುಗಳ ನರುಗಂಪಿನ ಪ್ರಣಯೋನ್ಮಾದ. ನೀಲಿ ಬಾನಿನಲಿ ಬಾಗಿತ್ತು ಗುತಿಹ ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. ರಾಗರತಿಯ ಸ್ವರ ಓ ರಾಧಾ. कार्यक्रम के अंत में श्री नितिन राजाराम शास्त्री डॉक्टर NS लक्ष्मी नारायण भट्ट की कविता प्रस्तुत कर रहे हैं. ಪ್ರೇಮವೆಂದರಲ್ಲ ಬರಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ. Nitin Rajaram Shastri concludes his recital with a poem written by Dr. N.S. Lakshmi Narayana Bhatta, ಪ್ರೇಮವೆಂದರಲ್ಲ ಬರಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೇಮವೆಂದರಲ್ಲ ಬರಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಮೇಳ ಬಿಳಸುವ ನೀತಿ. ಪ್ರೇಮವೆಂದರಲ್ಲ ಬರಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಮೇಳ ಬೆಳೆಸುವ ನೀತಿ.
ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಮೇಳ ಬಿಳಸುವ ನೀತಿ. ಆಗಸದ ತಾರೆಯನೆ ಕೀಳಬಲ್ಲ ತೋಳು, ಎಂಥ ವಿಷದ ಆಳಕ್ಕೂ ಇಳಿಯಬಲ್ಲ ಹಾಲು. ಆಗಸದ ತಾರೆಯನೆ ಕೀಳಬಲ್ಲ ತೋಳು, ಎಂಥ ವಿಷದ ಆಳಕ್ಕೂ ಇಳಿಯಬಲ್ಲ ಹಾಲು. ಲೋಕಚಕ್ರ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಕೀಲು, ಲೋಕಚಕ್ರ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಕೀಲು. ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಾವ ಒಂದೇ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಳು. ಪ್ರೇಮವೆಂದರಲ್ಲ ಬರಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಮೇಳ ಬಿಳಸುವ ನೀತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಮೇಳ ಬಿಳಸುವ ನೀತಿ. ತನ್ನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನೆ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಅರಿವು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗೆಲುವಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಒಲವು. ತನ್ನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನೆ ಕಾಣಬಲ್ಲ ಅರಿವು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಗೆಲುವಿಗೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಒಲವು. ಲೋಕ ಹಿಡಿತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಸ್ತಾರದ ನಿಲುವು, ಲೋಕ ಹಿಡಿತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಸ್ತಾರದ ನಲಿವು. ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವುದು ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ವರವು. ಪ್ರೇಮವೆಂದರಲ್ಲ ಬರಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಮೇಳ ಬಿಳಿಸುವ ನೀತಿ. ಎಲ್ಲ ಬಲವು ಎಲ್ಲ ಒಲವು ಮೇಳ ಬಿಳಿಸುವ नीति। इसके साथ ही प्रादेशिक लोक तथा लघु संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में श्री नितिन राजाराम शास्त्री का कर्नाटक क्षेत्रीय कन्नड़ लघु संगीत संपन्न होता है। संगत करने वाले कलाकार थे कीबोर्ड पर श्री पुरुषोत्तम किरगसूर, मैंडोलिन पर श्री सी विश्वनाथ, गिटार पर श्री प्रदीप किग्गाला, तबले पर श्री परमेश्वर हेगड़े तथा रिदम पैड पर श्री विनय रंगधोड़। Dear listeners, with that we conclude the light music vocal by Nitin Rajaram Shastri in the broadcast of National Program of Regional Folk and Light Music Concerts. He was accompanied by Purushottam Kiragasur on keyboard, C. Vishwanath on mandolin, Pradeep Kiggal on guitar, Parameshwar Hegde on tabla and Vinay Rangadhol on rhythm pad. आकाशवाणी मैसूर केंद्र में ध्वनि मुद्रित यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। This broadcast recorded in the studios of Akashvani Mysuru came to you from Akashvani Delhi.